शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अथ पुरुषो वै नारायणो कामयतः प्रजासृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यम्। निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातशुद्धो देव एको नारायणः। न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरे नम इति पश्चात् नारायणायेति उपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि। एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति। विन्दते प्राजापत्यपुत्रायस्पोषं गौपत्यम् ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति। य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति। तानेकदा समभरत्तते ततोमिति। यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति। तदिदं वरं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्त्वमेकं नारायणं कारणरूपमकारप्ररब्रह्मो एकदतर्वशिवो योधीरे प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। माद्यन्दिनमादित्याभिमुखो दीयान पञ्चपादकोपपादकात् प्रमुच्यते। सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते। नारायण सायुज्य
करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मात्मन्वदशजत तथ कामयत समात्मना वर्तेयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै दशमगुं भूतः प्रत्यश्नोत्। स दशभूतो भवत् दशभूतो हवैनामैषः तं वा एतं दशभूतगुं सन्तम् दशभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमगुं भूतः प्रत्यश्नोत्। स सप्तभूतो भवत् सप्तभूतो हवैनामैषः तं वा एतं सप्तभूतगुं सन्तम् सप्तभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै षष्ठगुं भूतः प्रत्यश्नोत्। स षड्भूतो भवत् षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं षड्भूतगुं सन्तम् षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगुं भूतः प्रत्यश्नोत्। स पञ्चभूतो भवत् पञ्चभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चभूतगुं सन्तम् पञ्चभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै चतुर्थगुं भूतः प्रत्यश्नोत्। स चतुर्भूतो भवत् चतुर्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्भूतगुं सन्तम् चतुर्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् तं वै वेदेतिष्ठगुं भूतः प्रत्यश्नौषि त्वयैनानाख्यातारैति तस्मान्नुहैनागुंश्चतुर्भूतार इत्याचक्षते तस्माच्चुश्रूषु पुत्रानागुं हृत्यतमः नेदिष्टो हृत्यतमः नेदिष्टो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद आत्मने नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वसमात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हन्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजा
परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Once a group of students were with Bhagwan in the interview room, and there was an elderly lady who was seated. Then Swami points to that elderly lady and tells the student, "Do you know this lady? She is a very ardent devotee of mine." And in her house, Swami with boyish enthusiasm, he says, Kumkum appears, Vibhuti appears, and Amritam manifests, and Swami himself manifested in her altar once. And then Swami asked this lady to narrate her story, and she starts her story. Her story goes like this. See, she would attend the bhajans in her neighbor's house, Sai bhajans on Thursdays. And every bhajan session, there would be some manifestation or the other, like kumkum, vibhuti, amrit, sugar candy, and so on. So she thought, if I arrange bhajans in my house, all these manifestations will take place. And she happens to be a very affluent lady, and she sets up a very beautiful grand altar and calls her neighbors and calls the entire colony and a grand function, and she starts conducting bhajans. And weeks pass by, months pass by, and nothing happens, and no materialization or anything. So this lady is now very upset. And one day she says, enough is enough. I want to have see Swami in my altar. And she just sits in her altar and tells Swami, Swami, I want only you. I want to have your darshan, Swami. That is what I want. And she just starts praying. They starts chanting Bhagwan's name. And when she is immersed in Namasmarana, one day passes, and next day when she is so lost in the thought of Swami, Swami manifests in her altar. And she has the darshan of Bhagwan. And now Swami takes over the story. And Swami says, see, this lady, when she wanted to have bhajans in her house, she had a laundry list for me. Huge list, to-do list. Swami, this photo, kumkum should appear. This photo, vibhuti should come. And when this particular bhajan is sung, candy should manifest. And this is what her wish was. But one final day when she decided, I want to have darshan of Swami alone. That is what I want. Not all these. When she did away with all this laundry list, and when he yearned for Bhagwan and Bhagwan alone, then that is when Swami manifests and give her darshan. See, this is the state of self-sacrifice. When we are able to sacrifice our wants, a little I, me, mine, I am Mr. So-and-so, I have accomplished all these things, and this all belongs to me. When that is sacrificed at the divine altar, it is, the stage of the human value, that is peace or shanti. What does Swami say about peace? You come asking, I want peace. Remove the I, the ego, that I am this, and remove the want, the desire. The peace is there for you. And the self-sacrifice is this peace that passeth all understanding. That is what is known as Prashanti. And all these values are the one that take us to the next stage. The mansion is complete, which is self-realization.
मोदकहस्ता गजानना मोदकहस्ता गजानना विनायका 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 विघ्नविनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरीनन्दन हे शिवनन्दन गौरीनन्दन हे शिवनन्दन पार्वतीनन्दन गजानना पार्वतीनन्दन गजानना मूषिकवाहन गजानना मूषिकवाहन गजानना मोदकहस्ता गजानना मोदकहस्ता गजानना मोदकहस्ता गजानना मोदकहस्ता गजानना विनायका विनायका भुजुरे मणवास गुरुदेवा भजुरे मणवास गुरुदेवा परम कृपालो साई महादेवा परम कृपालो साई महादेवा भजुरे वनवास गुरुदेवा इस दिन ध्यान करूं मैं तेरा इस दिन ध्यान करूं मैं तेरा जन्म जन्म का मिटे अंधेरा 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 पर ब्रह्म परमेश्वर रूपा पर ब्रह्म परमेश्वर देवा परम कृपालो साई महादेवा परम कृपालो साई महादेवा भजुरे मनवास गुरुदेवा परम कृपालो साई महादेवा परम कृपालो साई महादेवा भजुरे मनवास गुरुदेवा इस दिन ध्यान करूं मैं तेरा ध्यान करूं मैं तेरा जन्म जन्म का मिटे अंधेरा जन्म जन्म का मिटे अंधेरा पर ब्रह्म परमेश्वर रूपा परमेश्वर रूपा परम कृपालो साई महादेवा परम कृपालो साई महादेवा परम कृपा
बांधवा बाबा दया सागरा पतित पावना साई करुणा करा पावना साई करुणा करा पतित पावना साई करुणा करा पावना साई करुणा करा दीन बांधवा दया सागरा दीन बांधवा बाबा दया सागरा सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई 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 जीवनाधार साई जननी जनक बंधु साई जीवन आधार साई जनन जनक बंधु साई जीवनाधार साई जननी जनक बंधु साई जीवन आधार साई जनन जनक बंधु साई पतित पावना साई करुणा करा पावना साई करुणा करा पतित पावना साई करुणा करा पावना साई करुणा करा दीन बांधवा बाबा दया सागरा दीन बांधवा बाबा दया सागरा पतित पावना साई करुणा करा पावना साई करुणा करा दीन बांधवा बाबा दया सागरा दीन बांधवा बाबा दया सागरा सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई सत्य साई प्रेम साई शांति धर्म सिंधु साई जीवनाधार साई जननी जनक बंधु साई जीवन आधार साई जननी जनक बंधु साई पतित पावना साई करुणा करा पावना साई करुणा करा पतित पावना साई करुणा करा पावना साई करुणा करा दीन बांधवा बाबा दया सागरा साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान 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 करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो
श्री सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान करो चरण कमल ध्यान करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो साई साई स्मरण करो ईश्वर साई हरे नानक ईशो बोध हरे नानक ईशो बोध हरे नानक ईशो बोध हरे नानक ईशो बोध हरे राष्ट्र महावीर साई हरे सौराष्ट्र महावीर साई हरे राष्ट्र महावीर साई हरे सौराष्ट्र महावीर साई हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे सर्वधर्म प्रिय साई बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे बाबा सर्वधर्म प्रिय साई राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई अल्लाह ईश्वर साई हरे अल्लाह ईश्वर साई हरे गुरु नानक ईशो बोध हरे नानक ईशो बोध हरे राष्ट्र महावीर साई हरे सौराष्ट्र महावीर साई हरे राष्ट्र महावीर साई हरे सौराष्ट्र महावीर साई हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे बाबा सर्वधर्म प्रिय साई हरे राम हरे साई कृष्ण 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 हरे राम हरे साई
राम हरे साई कृष्ण हरे राम हरे साई कृष्ण हरे राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे वाहेगुरु 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 जी बोलो वाहेगुरु 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 जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु 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 जी बोलो सत्यनाम 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 जी सत्यनाम 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 जी बोलो सत्यनाम 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 जी सत्यनाम 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 जी बोलो कृष्ण 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 जी बोलो कृष्ण 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 जी बोलो कृष्ण 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 जी बोलो कृष्ण 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो बुद्ध 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 जी बोलो 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 नित्य नित्य जपिए बुद्ध नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बुद्ध नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बुद्ध नाम जी नित्य नित्य जपिए बुद्ध नाम जी बोलो राम 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 जी बोलो राम 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 जी बोलो राम 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 जी राम 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 जी बोलो नित्य नित्य जपिए राम नाम जी नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए राम नाम जी नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो చుక్కలన్నీయు బ్రహ్మ Stars are divine. సూర్యుడు ఒక బ్రహ్మ Sun is God. చంద్రుడన్నను బ్రహ్మ So also the moon. జలము బ్రహ్మ Water is God. స్వర్గమన్నను బ్రహ్మ The heaven is divine. వైకుంఠమది బ్రహ్మ The paradise. తల్లియు బ్రహ్మయే తండ్రి బ్రహ్మ Mother is God. Father is God. భాగ్యం వది బ్రహ్మ The wealth. వాలక్ష్యమది బ్రహ్మ The liberation. జీవించుటది బ్రహ్మ జీవి బ్రహ్మ The very life and the individual. పుట్టించునది బ్రహ్మ The cause for our birth. పోషించునది బ్రహ్మ The sustainer. గిట్టించునది బ్రహ్మ For annihilation. గృహిణి బ్రహ్మ The wife. కాలమంతయు బ్రహ్మ The time. కాయంబు బ్రహ్మ The body. ప్రకృతి అంతయు బ్రహ్మ మన ప్రేమ బ్రహ్మ The nature is God. The love is God. సర్వమును బ్రహ్మ Everything is మరియు divine. ఈ సభయు బ్రహ్మ And this assembly is divine. సత్యమును తెలుపునట్టి ఈ సాయి బ్రహ్మ Sai who speaks truth here is Brahma. ఇంతకంటను వేరెత్తి ఎరుగపరతూ What more is to be expressed? సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా సాధు సద్గుణగణ్యులవు సభ్యులారా The members of this assembly who are pious and noble, what more is to be communicated to you?
ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई